5 tricks good public speakers do to hold and grab the audience attention. कहते हैं सांड की पहचान उसकी सींग से होती है और इंसान की पहचान उसकी बोली से होती है। बचपन से मैं बड़ा हुआ ना, बहुत ऐसे जगह में मुझे लगा कि आई कांट स्पीक, आई वांट टू स्पीक बट आई कांट स्पीक। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग। सो सांड की पहचान उसकी सींग से होती है और इंसान की पहचान उसकी बोली से होती है और बोलने वाला धनी होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि लाइफ में आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल को हमेशा इम्प्रूव करो, ऑर्गेनाइज करो, बिकॉज बोलने वाला धनी होता है। दोस्तों, आप इंग्लिश में बोलोगे, लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन इफ यू वांट टू कन्विंस a group of people, English individually cannot help you. With English, you need strategic communication. जी हाँ. So let's go ahead with those 5 tricks and learn the skill of impressing and mesmerizing your audience. Speak with conviction. Conviction comes when you know that not only you are confident, even your audience is also confident about you. That means your audience trusts you. For example, मैं अभी आपको 2 different way से एक presentation दूंगा। आप बताना कौन से वाले presentation में आपको conviction देखी। Conviction मतलब आपको अच्छा लगा। Personality development is important and we all have personality. Then why we have come here? We have not come here to achieve personality. We have come here to organize our personality. Friends, personality development is very important. We all have personality, but we are not here to achieve personality. We all are here to organize our personality. So, अगर आपको दोनों में से किसी एक में मैजिक दिखा, तो वो मेरे कॉन्फिडेंस का मैजिक नहीं था, वो मेरे कन्विक्शन का मैजिक था, और वो आपको प्रेजेंटेशन नंबर 2 में जरूर दिखा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको प्रेजेंटेशन 2 में वो कन्विक्शन क्यों दिखा? टेक्निकली मैंने क्या किया मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे अंदर था दैट व्हाटएवर आई हैव इनसाइड, मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहता हूं, मैं लोगों के अंदर ये फील कराना चाहता हूं दैट पर्सनालिटी इज नॉट समथिंग टू अचीव, पर्सनालिटी नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। और ये मैं सच में चाहता हूं कि जो भी मुझे सुन रहा है उससे फील करे। योर बॉडी विल सिंक विथ योर वर्ड्स। टेक्निकली आई डोंट हैव एनी ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, बट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मुझे ये फील हो रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं और लोग मुझे सुन रहे हैं, एंड माई फीलिंग शुड रीच टू दोज पीपल। मेरी इमोशन 100% है, बट सिर्फ इमोशन से कुछ नहीं होगा, दैट शुड बी सीन इन माई बॉडी लैंग्वेज। मैं अगर बोल रहा हूं वी हैव टू डू दैट, लुक एट माई हैंड्स, आई एम शोइंग बाय माई हैंड दैट आई हैव टू डू दैट। सो मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं देयर इज ओनली वन वे, बट इसको मैं और कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं देयर इज ओनली वन वे। तो आप देख रहे हो मेरे आंखें एकदम बड़ी हो गई है, बिकॉज वट एवर आई एम स्पीकिंग आई एम फीलिंग दैट, एंड आई रियली वॉन्ट दैट वट एवर आई एम फीलिंग यू शुड फील दैट। फ्रेंड्स, इफ यू आर फीलिंग दैट, जस्ट मगिंग अप योर टॉपिक, जस्ट अपने टॉपिक को याद करके और लोगों के सामने एक एक करके पॉइंट्स बोल दिया, यू आर जस्ट अ स्पीकर, नॉट अ पब्लिक स्पीकर, बिकॉज अ पब्लिक स्पीकर इज अ मैन ऑफ कन्विक्शन, योर ऑथेंटिक वॉइस। When you are speaking with emotion and your body language, your voice counts. और वॉइस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है आपकी जो वॉइस की रेंज है। समटाइम्स योर रेंज विल गो हाई, समटाइम्स योर रेंज विल गो डाउन। You have to play with your voice. Not only that, your speed. Don't try to speak fast, otherwise you will lose your customer, you will lose your audience. Your speed should be slow, not too slow, but slow, so that everyone, they get time to listen to you, understand you, and feel you. Don't be fast. अभी मैंने कैसे बोला? Audience can listen to you. थोड़ा रुका. Audience can understand you. Audience can feel you. मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था. So that audience can listen to you, understand you, and feel you. And the next is pauses.
when you speak, you should take use of these pauses. These pauses are the great element to grab your audience attention, because when you are speaking and you use your pause, अभी देखा मैं पॉज लिया हूं, सो आप भी attentive हो गए मेरे ऊपर. और if you are not using this element, it will be difficult for you to grab the attention of the audience. Trigger their senses. Friends, people have majorly 3 type of senses. Visual, people they love to see. The second is people are auditory, means people they love to listen, they love sound, they love music. And the third is people are kinesthetic, they love to feel. When you are speaking in front of your audience is the combination of different types of people, am I right? And that is the reason. अभी मैंने कैसे बोला, मैंने वॉइस को मॉड्यूलेट किया. ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? People who are auditory, जिनको सुनने में अच्छा लगता है. Are you getting this point? People who are visual, उनके सामने मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो करूंगा. And I will speak with conviction. मैं फीलिंग के साथ आपसे बात करूंगा. क्या पता आप लोग में कोई हो जो काफी काइनेस्थेटिक है, शायद मैं उसे वो फीलिंग को दे पाऊंगा. End your talk with triggered action. If you are a public speaker and you are giving a talk on any topic, you have some message to pass on to your audience. आपको शायद पता हो that I am 2 times जोश टॉक स्पीकर. और जब हम जोश टॉक के प्लेटफॉर्म में जाके वहां पे स्पीच देते हैं, that's a public speaking forum. Our aim is not to just speak. Our aim is to make your audience feel what you are speaking. Am I right? ऑडियंस को ये फील कराना है कि आपके लाइफ में अगर ऐसे सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे. तो गाइस, व्हेन यू एंड द स्पीच, यू हैव टू एंश्योर कि आपको एंड तक एक ऐसा मैसेज देना है जिस मैसेज से लोगों के दिमाग में एक एक्शन आ जाए और वो लाइफ में कुछ करने के लिए एकदम एनर्जेटिक हो जाए, मोटिवेटेड हो जाए. सो मैं एक डेमो दिखाता हूं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू ऑल पॉजिटिव. सो फ्रेंड्स, व्हाई शुड आई नॉट be positive? If I'm positive, I can manage myself, I can manage my life, I can manage my decisions. If I am positive, I can manage my relationship, I can manage my health. Imagine, with one positive thought, I can manage my life. Don't you think that if you also trigger one positive thought inside your brain, what transformation you can build in your life? So are you ready to trigger that positive action in your life? So कोई भी टॉक को आप simply end मत करो that thank you, my topic is already finished. No, end with triggered action. और हाँ, एक चीज आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम चैनल में, स्पीक विद सुभाष को फॉलो करें. उसमें हम लोग काफी छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं सो दैट आप कम समय के अंदर एक बेटर कम्युनिकेटर हो पाओ. सो दिस ऑल टिप्स एंड टेक्निक्स आर लाइफ चेंजिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड.